Welcome everyone. So, how are you all doing? Okay, so I hope that you all are keeping fine and doing great. Today we will be completing our chapter 6 class 9th geography population. देख लीजिए हमने हमारी जर्नी कहाँ से स्टार्ट करी थी. We started with our chapter number 1, India size and location, and we have reached to the final chapter of your class 9th geography population. Okay, so today we will be completing this chapter. Okay, so let's begin. We started our chapter discussing some of the main portion of this, like population size and distribution. हमने population size and distribution देखा था. Then we studied the growth and the process of population change, and finally we come to characteristics or qualities of the population, जहाँ पर हमने sex composition, literacy level, occupational structure, and health conditions की बात करी थी. Right? I hope you remember all the things that we have discussed over here. Distribution, सेंसस का मीनिंग क्या था, कब पहला सेंसस हुआ था आपका, एंड हर 10 साल में आप देखते हैं इन एवरी टाइम पीरियड ऑफ 10 years सेंसस कंडक्ट करा जाता है. When we move ahead discussing about India's population distribution by terms of reference, in reference number as well as in reference to density. Then we discussed the growth and the process of population change. हमने ये मैप डिस्कस करा था. पॉपुलेशन ग्रोथ में हमने डिस्कस करा. एनुअल ग्रोथ रेट हमने रीड करी थी. व्हाट्स द मीनिंग ऑफ द टर्म एनुअल ग्रोथ रेट. देन वी मूव्ड अहेड डिस्कसिंग दिस ग्राफ, बार ग्राफ. We came to process of population change and growth, that is birth rate, death rate, migration, internal and international migrations क्या होते हैं. We discussed age composition, कितने एज ग्रुप्स, आपके कौन कौन से एज ग्रुप्स होते हैं. ठीक है, हर एज ग्रुप का हमने स्पेसिफिक रोल देखा. आप इस डायग्राम से देख सकते हैं परसेंटेज ऑफ द एज ग्रुप्स, डिफरेंट एज ग्रुप्स में कितनी कितनी परसेंटेज. वर्किंग एज ग्रुप इज द मोस्ट प्रोडक्टिव एज ग्रुप. वर्किंग एज ग्रुप ही आपकी सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव एज ग्रुप होती है, राइट. देन वी डिस्कस्ड अबाउट सेक्स रेशियो. We talked about literacy rate. What is literacy? Literate कौन होता है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है. It is very important. ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर डिस्कस करा, जहां पर हमने प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर के बारे में बात करी. देन वी मूव्ड अहेड डिस्कसिंग दी हेल्थ. ठीक है, सो हम अब यहाँ तक हमने हेल्थ तक लास्ट प्रीवियस लेक्चर में कंप्लीट कर लिया था. एंड वी डेवलप्ड एन अंडरस्टैंडिंग हाउ द गवर्नमेंट ऑल्सो प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. किस तरीके से गवर्नमेंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. ओके, today we'll be doing the rest of the portion of the chapter, and then we'll be discussing some of the important questions also, and then there will be an end to the lecture series of class 9. So we start with adolescent population. अब हम adolescent population से start करते हैं. The most significant feature of the Indian population is the size of its adolescent population. It constitutes 1/5 of the total population of India. कितना constitute करती है? It constitutes 1/5 of the total population of India. Adolescents are generally grouped in the age group 10 to 19 years. तो कौन सा age group होता है adolescents का? 10 to 19 years. They are the most important resource for the future. Nutrition requirement of adolescents are higher than those of a normal child or adult. Because ये जो age होती है, ये growing age होती है. So इस growing age में आप देखते हैं कि nutritional food जो है बहुत ज्यादा जरूरी होता है for this particular age group. Poor nutrition can lead to deficiency and stunted growth. That means आपकी जो growth है वो stop हो जाती है, आपको deficiency हो जाती है. But in India, the diet available to adolescents is inadequate in all nutrients. A large number of adolescent girls suffer from anemia. ऐसे आप देखेंगे बहुत सारी girls हैं जो anemia से suffer करती हैं. Their problems have so far not received adequate attention.
इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। तो अभी तक इतना एडिक्वेट एटेंशन नहीं मिल पाया है कि इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करा जा सके। द एडोलेसेंट गर्ल्स have to be sensitized to the problems they confront. Their awareness can be improved through the spread of literacy and education among them. See, सब चीजों के लिए अवेयरनेस क्रिएट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। एंड द बेस्ट वे एंड मीन्स टू क्रिएट अवेयरनेस फॉर एनी पार्ट ऑफ योर लाइफ, एनी पार्ट ऑफ योर any part of your health or any part of your aspect of your life, education is the best means. आपको स्कूल एजुकेशन, कॉलेज एजुकेशन दी जाती है। दैट्स द टाइम व्हेन यू स्टार्ट गेटिंग योरसेल्फ आल्सो नोन। आपको पता लगता है कि आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, ठीक है। सो दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम जब आप देखते हैं कि आप किस तरह की प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं, आपकी क्या नीड्स हैं, आपकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या वो फुलफिल हो पा रही हैं या नहीं हो पा रही हैं। सो this is the best way and means that we can convey how you need to keep yourself aware. Okay, now we are coming to the next topic, that is your national population policy. Recognizing that the planning of families would improve individual health and welfare, the government of India initiated the comprehensive family planning programs in 1952. सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1952 में आप देखते हैं कि फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करना स्टार्ट करा, इनिशिएट करा गया। फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम हैज sought to promote responsible and planned parenthood on a voluntary basis. The National Population Policy 2000 is a culmination of years of planned efforts. तो बहुत efforts लगते हैं, काफी सारे efforts करे गए, studies करी गई, research करा गया, और फिर आप देखते हैं कि एक फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम निकाला गया जहां पर फैमिलीज की किस तरीके से आपको अपनी फैमिली को ग्रो करना है उसके लिए उनको नॉलेज दी जाती है। The National Population Policy 2000 provides a policy framework for imparting free and compulsory school education up to 14 years of age. So इसमें ऐसा होता है कि जो इसके ऑफिसर्स होते हैं, जो भी इस टीम में काम करते हैं, वो लोग जाते हैं, लोगों को अवेयरनेस क्रिएट करते हैं, एंड दे टेल द एज ऑफ 14 ईयर्स तक कंपल्सरी एजुकेशन देना बहुत इंपॉर्टेंट है। रिड्यूसिंग इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट टू बिलो 30 per 1000 live birth, achieving universal immunization of children against all the vaccines preventable diseases, promoting delayed marriage for girls, and making family welfare a people-centered program, जहां पर आप लोगों को अवेयर कर सकें, ठीक है, और ये सब चीजें उनको बताई जा सके कि किस तरीके से आपको गर्ल्स की मैरिज डिले करवानी चाहिए। वैक्सीन्स, जो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स है, वैक्सीनेशन की जो प्रोग्राम्स हैं, कैंपेन्स हैं, उनका आप बेनिफिट्स लिए। जितने भी छोटे बच्चे हैं उनको सबको वैक्सीन्स लगती हैं, ठीक है, इम्यूनाइजेशन होता है उनका। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि वो टाइम पर अपना वैक्सीनेशन करवाएं, ठीक है, सो दैट द डिजीजेस कैन बी prevented. So all this was included in the national family planning program, comprehensive program निकाला गया था, जहां पर ये इसका जो प्रोग्राम का जो सेंटर्ड अप्रोच है या फिर जो मेन मोटिव था, दैट वाज द वेलफेयर ऑफ द पीपल। जो इसका मेन मोटिव जो है इसका, वो है वेलफेयर ऑफ द पीपल, ठीक है। Then we move ahead discussing National Population Policy of 2000 and adolescence. National Population Policy 2000 identified adolescents as one of the major sections of the population that need greater attention. So National Population Policy 2000 की जो थी, उसमें ये आइडेंटिफाई करा गया दैट एडोलेसेंट जो है वो एक मेजर सेक्शन है आपकी पॉपुलेशन का, एंड दे नीड अ वेरी ग्रेट अटेंशन, उनको भी बहुत अटेंशन दिया जाना जरूरी है। Besides nutritional requirements, the policy put great emphasis on other important needs of adolescents, including the protection from unwanted diseases, ठीक है, कि जितनी भी आपकी अनवांटेड एक्टिविटीज होती हैं उनसे इनको दूर रखा जा सके, ठीक है। It called for programs that aim towards encouraging delayed marriage and childbearing, education of adolescents about the risk, then making contraceptive services accessible and affordable, providing food and supplements, nutritional services, strengthening legal measures to prevent child marriage. Child marriage रुकवाई जाए, legal measures निकाले जाए इनके लिए। Also all these topics जो यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, इन सब की उनको knowledge दी जाए,
स्कूल में एजुकेशन दी जाए, अवेयर करा जाए दैट यू नीड टू बी कीप योर सेल्फ अवेयर फ्रॉम दीज थिंग्स, यू हैव टू कीप योर सेल्फ अवे फ्रॉम दीज थिंग्स, ठीक है। पीपल आर द नेशंस मोस्ट वैल्यूएबल रिसोर्स, a well educated healthy population provides potential power. So this is what we have been discussing here कि population जो है अगर आपकी healthy रहेगी, skilled population होगी, so it will be contributing more in the country's development. Okay, so this is the very small portion जो हमें cover करना था in the last series of your lecture, whereby we discussed about the adolescent population और नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी के बारे में डिस्कस करा, कब निकाली गई, 1952 में निकाली गई है, ठीक है। वेलफेयर इज द मेन ऑब्जेक्टिव, मेन इसका सेंटर, एंड देन वी डिस्कस्ड अबाउट द नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 एंड एडोलेसेंस, जहां पर एडोलेसेंस का मेजर फोकस रखा गया, ठीक है। सो विद दिस वी कंप्लीट योर चैप्टर ऑफ क्लास 9th, चैप्टर नंबर 6 पॉपुलेशन, हम इसके साथ में आपका फिनिश करते हैं। We complete your chapter population. I hope that things are clear to you, concepts are clear to you. Please go through the chapter very well. बहुत easy chapter है, आप आराम से इसको go through करें। यहाँ पर ये जो पैराग्राफ है ये important है, आप ये देखें कि कहाँ पर कौन कौन सी regions हैं जहाँ पर density ज्यादा है, जहाँ पर density कम है, और उनके क्या कारण है कि क्यों density high है, low है। So this is all about this chapter. It's simple and easy. You can see this map also. I can just let you know once again. आप देखिए जो डार्क वाला है यहाँ पर सबसे ज्यादा आपको पर्सन्स मिलेंगे, दैट इज योर केरल, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, then 251 to 500 persons you can see in these regions, 101 to 250 you can see, and then 100 and below here, ठीक है। प्लीज इस मैप को प्रैक्टिस करें। Then we discussed about the population growth, annual growth rate क्या होती है, definition पूछ सकते हैं। All right, so we have discussed every topic of this chapter in detail. मैंने आपको काफी डिटेल में ये टॉपिक समझाया है, ठीक है। सो माइग्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट है पॉपुलेशन चेंज का, कैसे अफेक्ट करता है माइग्रेशन, दिस ऑल्सो आई एक्सप्लेन्ड यू। ऑल राइट, यहाँ ये जो छोटी छोटी एक्टिविटीज दे रखी हैं, प्लीज ट्राई टू आंसर दीज क्वेश्चंस, इन क्वेश्चंस को आप आंसर करें। यहाँ आप टेबल देख सकते हैं 6.2 इंडिया सेक्स रेशियो 1951 to 2001। यू कैन चेक आउट किस तरीके से आप देखिए यहाँ पर इट इज 46 41 930 रिड्यूस हुआ है, देन यहाँ पर आप देखिए इंक्रीज हुआ है फिर से। So these are the tables which are important that you should know. आप इन सब चीजों को अपने आंसर्स में इंक्लूड करें। All right. Okay, so now we'll be discussing some of the important questions related to this chapter, and then I'll be giving you some 2 minutes to quickly write the answers, and then we'll discuss them. So now we'll come to the questions. हम कुछ questions discuss करते हैं. Okay, so we'll be discussing some of the important questions from this chapter. See, 1 mark questions. Give the term for the study of population. So एक term use करा जाता है population की study के लिए, and the term which is used for this is demography. ठीक है, क्या term use करा जाता है? The term used is demography. ठीक है, so the term basically used is demography. In how many years is the official enumeration of population carried out for census? तो कितने साल में आप census conduct करा जाता है? 10 years. What do you mean by census? Census का क्या meaning होता है? It is an official enumeration of people which is done periodically, जो कि periodically करा जाता है. Then we have some 3 to 5 marks questions. ये questions आपसे 3 to 5 marks में पूछे जा सकते हैं.
Why is population the pivotal element in the social studies? Pivotal means important. Secondly, ये क्वेश्चन आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है, why is it important for us to study about population in geography? Why is it important to know about the population of a country? So these are the three questions. The meaning is same, answer is same to this. The answer is, you can see, the people are important to develop the economy and society. See, people जो हैं बहुत important होते हैं. Human as a resource is very important. I have already explained you क्यों, क्योंकि हमारे economy और society के development में बहुत help करते हैं. The people make and use resources and are themselves resources with varying qualities. ठीक है, खुद भी वो resources use करते हैं. They are themselves also resources. Coal was a piece of rock until people were able to invent technology to obtain it and make it a resource. For social and economic planning and development, it is essential to know about the total number of people, its annual growth rate, their social and economic status. So these are all the reasons कि आपको किसी भी country की population के बारे में पता होना क्यों जरूरी होता है. Then what is census? When was the first census held in India? Which type of information can we get through census? सेंसस क्या होता है, कब करा गया, ये आपको पता है. पहली बार सेंसस 1872 में हुआ था. उसके बाद आप देखते हैं कि प्रॉपर सेंसस जो है वो 1881 में करा गया. सेंसस की डेफिनेशन क्या होती है? इट इज द एन्यूमरेशन ऑफ द पॉपुलेशन विच इज डन पीरियोडिकली, जो कि पीरियोडिकली करी जाती है. ठीक है. And then आप देखिए इंडिया, the Indian census is the most comprehensive source of demographic, social and economic data, because इस census के थ्रू आपको बहुत सारी information पता लगती है population से related. Then we come to the next part of questions. Which state of India has the highest density of population? It is West Bengal. Which state has the largest population in India? That's UP. ये बहुत important questions हैं, आप ये याद रखें कि कौन सा क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे और क्या उस क्वेश्चन की डिमांड. इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि उस क्वेश्चन की डिमांड क्या है, ये भी पता होना चाहिए. ओके. जस्ट गिव मी अ मिनट. ओके, सो आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखें. जो क्वेश्चन है उसका आंसर आप देखिए एक बार. ऑल राइट. सो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपको पता होने चाहिए, बिकॉज दीज आर ऑफन आस्क्ड, ये पूछ लिए जाते हैं. ठीक है. Which state of India has the highest density of population? West Bengal. Which state has the largest population in India? That's UP. Which state of India has the lowest density of population? कौन सा स्टेट है जहां पर सबसे ज्यादा डेंसिटी कम है? अरुणाचल प्रदेश. Name the union territory having the highest density of population. It is Delhi. What is the population density of India according to the census of 2001? 324 persons per square kilometer. ठीक है. सो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, प्लीज आप इनको नोट डाउन कर लीजिए. यू कैन नोट डाउन दीज क्वेश्चंस. Please have a look, go through the questions that I'm discussing with you. Okay, now we'll look at some other important questions. हम दूसरे questions पर देखते हैं. यहाँ देखिए, this is the very interesting question. Why Kerala state is densely populated? Kerala state जो है वो काफी ज्यादा densely populated है, आपने देखा भी है मैप में. So you have to give reasons for it, that Kerala state जो है वो इतना densely populated क्यों है. So some of the reasons that is visible to you are the flat plains. Obviously, flat plains. Kerala has flat plains. It is easy to lay down railway lines or build roads on flat land. Therefore, dense network of transport is available. वहाँ आप देखते हैं कि बहुत ज़्यादा dense network of transportation available है.
fertile soils are available, food crops grow करी जाती हैं वहां पर, like rice are grown in abundance to fulfill the basic need of the people, because rice जो है वो staple diet मानी जाती है. Rice is the staple food of India. Other crops like tea, coffee, rubber, spices, these are also grown there. ऑल्सो आप देखते हैं कि अबंडेंट रेनफॉल होता है. अगर आप क्लाइमेट याद करें, मॉनसून का मैकेनिज्म याद करें, तो आपको पता है कि मॉनसून सबसे पहले सदर्न टिप पे हिट करता है एंड वहां आपका केरला स्टेट लगता है. ठीक है. So due to the abundant rainfall, fields are irrigated. People do not face the problem of water scarcity. ठीक है. So this is a very important question that you can see here. काफी important question है ये. All right. Now we'll discuss some more set of questions. See the next set of questions over here. Population growth and the process of population change. यहाँ से questions देखते हैं. What is the sex ratio in India according to census 2001? 2001 के census के according sex ratio क्या है? According to census 2001, sex ratio of India is 933 females for every 1,000 male. What kind of migration leads to change the distribution of population within the nation? They are asking within the nation. Question को please आप ध्यान से पढ़ें. So within the nation is internal migration. ठीक है. Within the nation is internal migration. What is birth rate? Birth rate क्या होती है? Number of live birth per 1,000 persons in 1 year. What is death rate? It is the number of death per 1,000 persons in a year. ठीक है. पूरे साल में कितने लोग मर रहे हैं, कितने लोगों की डेथ हो रही है, that we calculate as per 1,000. Reference to per 1,000. You can note down these questions. I am also giving you time. आप इनको note down भी कर सकते हैं. I hope that you are finding yourself comfortable whatever we are discussing. See, these are some of the basic questions इस chapter से जो बनते हैं. ठीक है, वो मैं आपको discuss कर रही हूँ. Okay, so now I can switch on to the next question. So next question देखिए. Distinguish between internal migration and international migration. ठीक है, तो ये question भी आपसे पूछा जा सकता है कि आप distinguish करें, differentiate करें internal migration and international migration में. ठीक है. Internal migration is migration within the country, that is called as internal migration. On the other hand, international migration की अगर बात करें, so it is migration between the countries. Okay, एक country से जब हम दूसरी country जाते हैं, international migration. Internal is हम हमारी country के अंदर ही state to state migration और फिर city to city migration. Internal migration does not change the size of the population of the country. वहीं अगर हम बात करें international migration की, तो ये आपके size of the population को change कर देता है, because आप आपकी country को छोड़ करके दूसरी country में चले गए हैं. For example, अगर आपकी country में 100 लोग रह रहे हैं, say for example India में 100 people रहते हैं, ठीक है, और यहाँ से अगर कोई एक इंसान आपकी country को छोड़ करके US चला गया है, तो यहाँ कितने हो जाएंगे अब? 99. ठीक है, here only will be 99 and one person who has left your country, he will be going to USA. वहां पर उसकी population increase हो जाएगी. ठीक है, अगर वहां 200 होंगे तो वो 201 हो जाएंगे. All right, so this is the differentiation between the internal migration and international migration. Please note down these questions, important questions हैं ये. All right, we come to the next question. There has been a sudden abrupt rise in population of India since 1961. ऐसा देखा गया कि 1961 से आप देखते हैं कि population में आपको rise दिखने लगता है ना. आप कुछ reasons बताने होंगे कि क्या reason रहे होंगे जिसकी वजह से population में आपको rise देखने को मिला. Some of the reasons are medical facilities were made available to the people. Hospitals और dispensaries were opened in the rural areas. आप देखते हैं कि hospitals open कर दिए जाते हैं, dispensaries open करी जाती हैं.
Then medical facilities led to the decline in death rate, but the birth rate remained as usual. As a result, the population increased. तो डेथ रेट तो कम हुई, लेकिन बर्थ रेट जो है वो आपकी उतनी ही रही. एज अ रिजल्ट आप देखते हैं कि पॉपुलेशन में इंक्रीज आने लगता है. पीपल वर नॉट अवेयर ऑफ फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स. इस समय आप देखते हैं कि लोगों को फैमिली प्लानिंग के बारे में नहीं नॉलेज है. ठीक है. लिटरेसी रेट बहुत ज्यादा कम है, लोगों को पढ़ना नहीं आता, लिखना नहीं आता है. देयर वॉज अ ट्रेंड ऑफ अर्ली मैरिजेस फॉर गर्ल्स. Daughters were not sent to schools, especially in the rural areas. So these are some of the reasons जहां पर आप इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं. क्या क्या कारण रहे जिससे पॉपुलेशन जो है वो एकदम से इंक्रीज हुई है 1961 में. डेथ रेट कम हुई और पॉपुलेशन में इंक्रीज देखने को मिला. तो उसके ये कुछ रीजंस हैं जो कि आप लिख सकते हैं अपने आंसर्स में. All right. So coming to the next set of questions, that is again very important question. Distinguish between the population growth and population change. Population growth and population change. दोनों में difference होता है. Population growth always results due to the change in size of population. Population growth हमेशा आप देखेंगे कि population में population की size में change आता है, इसलिए population growth में change आएगा. Population change is the change that may result due to the migration, death rate, birth rate, and changes in age composition and sex ratio. वही population change जो है वो किसकी वजह से आता है? That is because of migration, death rate, birth rate, age composition, sex ratio. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये. आई एम अगेन एम्फसाइजिंग ऑन इट. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. दोनों में डिफरेंस क्वेश्चन पूछा जाएगा ये आपसे. पॉपुलेशन ग्रोथ और पॉपुलेशन चेंज दोनों अलग एस्पेक्ट हैं. Without a change in population, population growth is not possible. Even when there is no population growth, there may be a population change. तो population growth तो आपके difference between birth rate and death rate की वजह से होता है. And population changes because of जो उसकी कॉम्पोजिशन में चेंज आ रहा है. ठीक है. कि क्या क्या एज कॉम्पोजिशन है, क्या सेक्स रेशियो है, बर्थ रेट, डेथ रेट कितनी है, दैट इज ऑल. पॉपुलेशन ग्रोथ इज द डिफरेंस. जो आपका डिफरेंस है दोनों के बीच में. आई टोल्ड यू, जब हम आपको लाइव पॉपुलेशन दिखा रहे थे तब हमने आपको डिफरेंस दिखाया था बर्थ में और डेथ में. ठीक है. इंटरनल माइग्रेशन डज नॉट लीड टू चेंज इन पॉपुलेशन ग्रोथ ऑफ द कंट्री. वहीं अगर इंटरनेशनल माइग्रेशन करा जाता है तो पॉपुलेशन में चेंज आ जाता है. Since the number of person does not change in this case, there is no growth in population. क्योंकि यहाँ पर आप देखते हैं इंटरनल माइग्रेशन में लोग बाग चेंज नहीं होते हैं. पीपल आर एक्चुअली माइग्रेटिंग विद इन देयर कंट्री ओनली. तो पॉपुलेशन में कोई ग्रोथ नहीं होता है. In a given population, if there is a change in sex ratio, it will be considered as a population change. अगर एज कॉम्पोजिशन में चेंज आएगा तो पॉपुलेशन चेंज हो जाएगी. सेक्स रेशियो में चेंज आता है, पॉपुलेशन चेंज हो जाती है. ठीक है. सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जहां पर आप ये देख सकते हैं कि पॉपुलेशन ग्रोथ एंड पॉपुलेशन चेंज में क्या डिफरेंस होता है. प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन. दिस अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. All right. So please you can note down these questions. ये कुछ important questions हैं. इनको note down कर लीजिएगा. And with this we come to the end of your chapter. Okay, we come to the end of your chapter, population. You can see all these things that we have covered up. Now I just give you 2 to 3 minutes. Quickly, आप अपनी अपनी बुक्स ओपन करें, एक्सरसाइज ओपन करें एंड फटाफट से आप इन क्वेश्चंस के आंसर्स को टिक करें एंड देन वी विल डिस्कस देम क्विकली. बिकॉज अब आपको बहुत अच्छे से चैप्टर आ चुका होगा. आई होप एंड आई एम बिलीविंग दैट नाउ यू आर कंप्लीटली नोन टू दिस चैप्टर. चैप्टर काफी इजी था. सो आप आंसर्स फटाफट से टिक करें
लुक एट द क्वेश्चंस, सारे क्वेश्चंस देखें आप, नीचे भी आपको यहाँ जो दे रखे हैं, आंसर द क्वेश्चंस इन वेरी ब्रीफ. मेजर कंपोनेंट्स, एज स्ट्रक्चर, डेथ रेट, बर्थ रेट, डिटर्मिनेंट फैक्टर पॉपुलेशन चेंज का, माइग्रेशन कैसे है, पॉपुलेशन ग्रोथ, पॉपुलेशन चेंज में डिफरेंस. सी द क्वेश्चन इज गिवन इन योर बुक. आई हैव डिस्कस द आंसर. हेल्दी लिविंग के क्या एडवांटेजेस हैं, ये हमने डिस्कस करे थे. नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी के क्या फीचर्स हैं, occupational structure and development. We have discussed all these things. Quickly tick the answers. So first question, migrations change the number, distribution and composition of the population in dash. बताइए. माइग्रेशन की वजह से आप देखते हैं that there is a change in number, distribution, जो distribution होता है वो भी change हो जाता है, composition of the population भी change हो जाती है. It is true. ठीक है. इन कहां पर both the area of departure and arrival, जहां से आप डिपार्चर होते हैं, दैट मीन्स जहां से आप जिस जगह को आप छोड़ के जा रहे हैं वहां पर भी चेंज आता है, प्लस आप जिस जगह जाते हैं वहां पर भी चेंज आ जाता है. ठीक है. सो इट इज बोथ द एरिया ऑफ डिपार्चर एंड अराइवल. डिपार्चर मीन्स उस जगह से आप जा रहे हैं, से फॉर एग्जाम्पल आप रूरल से अर्बन एरिया में जा रहे हैं, तो रूरल एरिया में चेंज आ जाएगा बिकॉज आप वहां से लीव कर रहे हैं. ठीक है. एंड यू आर मूविंग टू अ वेरी न्यू प्लेस, आप उस नई जगह जा रहे हैं तो वहां की भी पॉपुलेशन में चेंज आएगा. सो डिपार्चर एंड अराइवल. A large proportion of children population is a result of. A large proportion of children in the population is a result of high birth rates. Birth rate high है तभी आपको ज्यादा बच्चे दिखाई दे रहे हैं. ठीक है. Then the magnitude of population growth refers to. बताइए. The magnitude of population growth refers to the number of persons added each year. हर साल आप देखते हैं कि लोग number of persons keep on increasing, हर second increase हो रहे हैं. ठीक है. So it is the number of persons added each year. Fourth question, according to the census of 2001, a literate person is one who. कौन होगा एक literate इंसान? 7 years old and can read and write any language with understanding. Okay. So I hope now this is clear to you. हमने ये आपके 4 questions हैं, इनको भी डिस्कस कर लिया है. प्लीज आप आंसर चेक कर लें. ठीक है. दिस इज बोथ द एरिया ऑफ डिपार्चर एंड अराइवल, हाई बर्थ रेट, number of persons added each year, 7 years old and can read and write in any language with proper understanding. All right. So with this, we complete our syllabus of class 9th geography. So I hope that this is a wonderful journey with you all. And आप लोगों को समझ में आया होगा, whatever I tried my best to explain you. And I provided you with questions as well so that आपको exam point of view से भी समझ में आए. So all the best and good luck for your further ahead. So with this, I would like to end. And I just want to show you this one picture. With this, I will be ending the lecture series of class 9th geography.
So this is a message from my side to all of you, whoever is viewing my series of lectures, Class 9 Geography. Whatever we have done, Class 9 Geography is a little difficult. There are various concepts, काफी सारे concepts हैं. मैंने कोशिश करी है आपको समझाने की. So results अब उन concepts का आपको तभी निकलेगा जब आप डेली प्रैक्टिस करेंगे, बिकॉज यू हैव द पोटेंशियल. आप में पोटेंशियल तो है, लेकिन फॉर दैट यू नीड अ की, एंड द की इज टू प्रैक्टिस डेली, टू लिसन द लेक्चर्स वेरी केयरफुली. ठीक है, तो द की ओवर हियर, द की ओवर हियर इज daily practice, daily revision. So whatever we have done, keep revising every day. आप रोज इसको रिवाइज करें. So it will be easy for you to undertake the things and understand the concepts. ठीक है? So if you don't have the key, you will be not burning yourselves. You will not find any results. ठीक है? आप में potential है, but for that potential you need this key. और इस key के लिए आपको क्या choose करना पड़ेगा? That is the daily practice. So this is the message from my side that I would like to give to you. Okay, so if you want results, you need this key. आपको ये key चाहिए. ठीक है, key is the चाबी. ठीक है, तो अपने potential को improve करने के लिए you will have to practice daily. Otherwise, you can choose the other side as well, but you won't be choosing it. Okay, so you are smart enough to choose the right side, whether you want the results or you don't want the results. So thank you, everyone. Good luck. All the best.